Okay जी, so the receipt side, the payment side, सही है, the closing adjustments and the opening values, सही है. So as per steps, we don't have to calculate accumulated fund, but हमें subscription account बनाना है, ठीक है जी. Subscription account के अंदर सबसे पहले at the start of the year it says subscription prepaid by members and subscription owed by members, ठीक है जी. What's the date? 1st April 2008. So 2008 April 1st 2008 April 1st सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनता है ओप्पो से. तो ओविंग्स ब्रॉट फॉरवर्ड, प्रीपेड ब्रॉट फॉरवर्ड, प्रीपेड के नीचे बैंक, यहाँ पे चार्ज टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है. और उसके बाद प्रीपेड कैरेट डाउन, ओइंग कैरेट डाउन. Now the thing which is important over here is opening entries are on the year start date. The rest of the entries will be year end date, ठीक है, which is 2009 March 31st. 2009 March 31st. 2009 March 31st and same copied over here. सही है, ठीक है जी. Subscription prepaid 100 and owing was 50. Prepaid was 100, owing was 50. During the year subscription received कितनी हुई बैंक में on the receipt side 2250. The subscription received is 2250. And year end pay subscription owing is 200. There's nothing mentioned regarding subscription prepaid. Owing is 200. Subscription prepaid के बारे में कुछ भी नहीं mentioned है. तो now this would be 2250, 2450, 2550. तो 2550 minus 50, तो subscription in the income and expenditure account will be 2500. ठीक है जी. So that was step number 2 within our steps. ठीक है. उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, ठीक है जी. उसके बाद नाउ वील सी के अब हमें क्या क्या करना है, सही है. हाँ, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि वील सी एनी एक्सपेंस जिसके अंदर ओइंग या प्रीपेड है. तो रेंट और जनरल एक्सपेंसेस में ओइंग या फिर प्रीपेड है, ठीक है जी. तो रेंट का अकाउंट बना लिया, जनरल एक्सपेंस का अकाउंट बना लिया, ठीक है. प्रीपेड, ओइंग, ओइंग, प्रीपेड, प्रीपेड के नीचे बैंक या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए चार्ज कैलकुलेट करना. अगेन प्रीपेड, ओइंग, ओइंग, प्रीपेड, प्रीपेड के नीचे बैंक, चार्ज टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है. These were the opening values at the start of the business, ठीक है. इसमें हमारे पास कुछ भी नहीं था, ना ओपनिंग ओइंग ना ओपनिंग प्रीपेड. During the year payment of rent is 1530, 1530, and payment for general expenses is 1530 ये, और जनरल एक्सपेंसेस की पेमेंट थी आपके पास 490 की. And at the end of the year rent was accrued means owing of 30 and general expenses were prepaid by 20, ठीक है. So rent हुआ 1560, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये भी 1560 हो गया. ओके जी. ये हुआ 490, 490 यहाँ सिर्फ 20 है, माइनस किया तो 470 हो गया चार्ज टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है. इसके बाद जनाब आपके पास एक डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट है. ओके जी. वो कह रहे हैं 10% per annum on the value of equipment held at the end of each financial year.
सही है जी। तो इक्विपमेंट में there was a brought forward value 4400 at the start of the year, plus you purchased an equipment for 1800 during the year. So this is 00 to 6200 सही है। उसके ऊपर 10% depreciation which is 620 is your depreciation expense। ठीक है जी, तो ये आ गया। इस क्लब के पास कोई भी आपके पास ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं थी। दिस क्लब is not involved in any of the profitable activity। ठीक है, तो लेट्स जस्ट सिंपली प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बहुत सिंपल है, 2 columns। we'll first list down all the possible income of the club। इसमें सबसे पहले सब्सक्रिप्शन इनकम है, the one that we have calculated over here। सब्सक्रिप्शन इनकम कैलकुलेट की हमने 2500। उसके बाद generally income will appear on the receipt side because these are the things that you have received: interest received and entrance fee for sports day। Okay जी, interest received, entrance fee। Let me recheck the amounts, which is 100 and 520, 100 and 520। अच्छा जी, if there is any profitable activity like refreshment or bar or cafe, तो उसका जो प्रॉफिट होता है वो भी इनकम में ही आता है। ठीक है, ओके। सिर्फ यही इनकम है इस क्लब की, तो 3,3120 की इनकम आ गया। नाउ लुक एट एक्सपेंडिचर वाला पोर्शन। एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसेस में देखते हैं जी, सबसे पहले आ गया secretarial expenses, advertising expenses, secretarial expenses, advertising expenses। Secretarial expenses were 210, advertising expenses was 40। ठीक है जी। जनरल एक्सपेंस और रेंट, जनरल एक्सपेंस की वो अमाउंट जो हमने कैलकुलेट किया और रेंट की भी वो अमाउंट जो हमने कैलकुलेट किया। ठीक है जी, जनरल एक्सपेंस और रेंट, the amounts that we have calculated। Rent is 1560 and this is 470। 1560, this is 470। उसके बाद स्पोर्ट्स डे एक्सपेंसेस ऑफ 370। स्पोर्ट्स डे expenses 370। अच्छा जी, there's another thing that you could have done। स्पोर्ट्स डे की एंट्रेंस फी थी 520, you could have deducted 370 and you would have written profit from sports day। Like 520 was the entry fee income and 370 were expenses, so the profit was 150। You could have written it directly, but I didn't do that, so even that would have been right। सही है, तो इनकम अलग लिखा, एक्सपेंस अलग लिखा, वो ऑटोमेटिकली माइनस होना ही है उसमें से, मसला नहीं है। ओके, उसके बाद विद इन द एडजस्टमेंट्स आपके पास आ गया डेप्रिसिएशन, एक एक्सपेंस आ गया, डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट व्हिच इज 620। ठीक है जी, सबको ऐड करो, कितना भाई? व्हाट इज द टोटल? Sir, I'm getting 2,900. 2900। एक मिनट सर, मुझे जरा फिर से चेक करना है। 990। Sir, 3270. Sorry, 32। 70. Okay, so there's a deficit of 150। ठीक है, ऑलराइट।
Moving on, it says select relevant item appear in the receipt and payment account which should not be included in the income and expenditure account. Explain why. ठीक है. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में एक आइटम सेलेक्ट कर लें. सबसे पहले तो ये ट्रांसफर टू बैंक डिपॉजिट अकाउंट जो आपकी इनकम या एक्सपेंस नहीं है, एंड परचेज ऑफ इक्विपमेंट. दोनों चीजें ले लेते हैं. फर्स्ट थिंग इज बैंक डिपॉजिट और दूसरा परचेज ऑफ इक्विपमेंट. ठीक है. बैंक डिपॉजिट इज बेसिकली ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम करंट अकाउंट फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट. बेसिकली आप अपने करंट एसेट को क्लासिफाई करो एज अ नॉन करंट एसेट. ठीक है. So there is no income, neither an expense in it. Purchase of equipment, it's a capital expenditure that is purchase of non-current asset to be recorded in SOFP rather than expense in income statement. ठीक है जी. So this was one of the questions, one of the two questions that you were supposed to do. Next question में भी मैं उसका एक ब्रीफ दे देता हूँ ताकि जब आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो बचता नहीं. Okay. Mokolodi Athletics Club was formed on 1st August. That means it's a new club. New club का मतलब क्या है? No opening balances. Okay. Now, इसमें you have to prepare shop की income statement. सही है. And income and expenditure account. सही है. Okay. तो इसमें स्टेप नंबर 2 फॉलो होगा. यू हैव प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट. सही है. अच्छा जी. इसमें यू हैव टू पीएलसीए भी बनाना पड़ेगा. व्हाई? परचेज कंट्रोल अकाउंट बिकॉज क्लोजिंग बैलेंसेस में क्रेडिटर्स गिवन है. दिस इज फॉर पीएलसीए. परचेज कंट्रोल अकाउंट बना के तुम्हें परचेजेस निकालनी पड़ेंगी. से परचेजेस कैलकुलेट करनी पड़ेगी. नंबर 4 तुम्हें क्या करने पड़ेंगे? तुम्हारे पास assistant wages owing, general expenses owing. ठीक है. एक्सपेंस अकाउंट बनाने पड़ेंगे असिस्टेंट वेजेस और जनरल एक्सपेंस का. नंबर 5 डेप्रिसिएशन तुम्हें रीवैल्यूएशन मेथड से निकालनी पड़ेगी which is mentioned within the steps. ठीक है. और सही है. और नंबर 6 तुम्हें apportionment of expense भी करना पड़ेगा which is like this. जितना भी रेंट कैलकुलेट हुआ है उसका 20% वहां देना पड़ेगा. ठीक है. This question will require you to follow the steps rigorously. ठीक है. I would say कि जो भी steps है सही है, follow them rigorously for this question and you'll be able to do it. सही है. So this is your assignment for today. Let's see how well you attempt this. All right. So what's the format for trading account?